दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज राज्यसभा में एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जिसके बारे में नो कॉन्फिडेंस के चक्कर में शायद ध्यान नहीं गया होगा, और वो ये है कि लॉ मिनिस्टर ने राज्यसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है, हटा देने का प्रावधान है। दोस्तों, आपको याद होगा कि मार्च के महीने में जस्टिस के.एम. जोसेफ की एक संविधान पीठ ने फैसला दिया था जिसमें कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इलेक्शन कमीशन के चुनाव में शामिल होने की बात कही थी। मैं आपको एक न्यूज आइटम दिखाता हूं, फिर बाद में मैं आपको जो लोकसभा राज्यसभा में जो मेघवाल साहब ने जो बिल इंट्रोड्यूस किया है उसका वीडियो दिखाऊंगा। पहले मैं आपको समाचार पढ़ा देता हूँ। ये हिंदुस्तान टाइम्स से है, देखिए। ये देखिए, ये है New bill on election body appointment, no chief justice in election commission. The central government listed a bill in Rajya Sabha that seeks to drop the chief justice of India from the selection committee for the appointment of chief and other election commission of India. इसकी स्टोरी सुनिए। New bill on election body appointments, no chief justice in selection panel. The central government listed a bill in Rajya Sabha that seeks to drop the Chief Justice of India from the selection committee for the appointment of chief and other election commissioners of India. The Chief Election Commissioner and election commissioners will be selected by a three-member panel comprising the Prime Minister, Leader of Opposition in Lok Sabha and a cabinet minister, according to a new bill that was introduced in the Rajya Sabha today. In March, the Supreme Court had, in a bid to ensure the independence of the Election Commission, ruled that appointments to the poll body would be made on the advice of a committee comprising the Prime Minister, Leader of Opposition in the Lok Sabha and the Chief Justice of India. A five-judge constitution bench headed by Justice K.M. Joseph, in a unanimous verdict, had held that the process would remain in place until Parliament framed a law on the selection process. An election commission that does not guarantee the rule of law is against democracy. In its wide spectrum of powers, if exercised illegally or unconstitutionally, it has an effect on the outcomes of political parties. The election commission has to be independent. It cannot claim to be independent and then act in an unfair manner. A person in a state of obligation to the state cannot have an independent frame of mind. An independent person will not be servile to those in power, Justice Joseph had stated before the Supreme Court ruling. The Chief Election Commissioner and election commissioners were appointed by the President on the recommendation of the government. US warned Pakistan of isolation, encouraged it to remove Imran Khan as PM, report the Chief Election Commissioner and other election commissioners. Appointment Conditions of Service and Term of Office, Bill 2023, has been listed for introduction in the Rajya Sabha today. Union Law Minister Arjun Ram Meghwal introduced the bill to regulate the appointment, conditions of service and term of office of the Chief Election Commissioner and other election commissioners, the procedure for transaction of business by the Election Commission and for matters connected therewith or incidental thereto. The Congress slammed the new bill, calling it a blatant attempt at making the Election Commission a total puppet in the hands of the PM. What about the Supreme Court's existing ruling which requires an impartial panel? Why does the PM feel the need to appoint a biased election commissioner? This is an unconstitutional, arbitrary and unfair bill. We will oppose this on every forum, Senior Congress leader K.C. Venugopal tweeted. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal hit out at Prime Minister Narendra Modi, accusing him of weakening Indian democracy through decision after decision, calling it a very dangerous situation. Kejriwal, in a tweet,
said the proposed selection panel would have 2 BJP and 1 Congress members. Obviously, the selected election commissioner will be loyal to the BJP, the Aam Aadmi Party chief said. अब मैं आपको दिखाता हूं कि राज्यसभा में जब ये बिल अर्जुन मेघवाल साहब इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो क्या हुआ, देखिए। Introduction, Sri Arjun Ram Meghwal. Thank you, Honorable Chairman, sir. With your permission, I move for leave to introduce a bill to regulate the appointments, conditions of service, and term of office of the Chief Election Commissioner and other election commissioners, the procedure for transaction of business by the Election Commission, and for matters connected herewith or incidental thereto. Thank you. One notice given by Dr. John Brittas opposing the introduction of Election Commissioner and other election commissioners appointment of conditional service of term of which Bill 2023. Moving? Yes, sir. Not moving? Yes. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri Arjun Ram Meghwal to introduce the bill. Sir, with your permission, I introduce the bill. Thank you. अब दोस्तों, मुझे यह समझ में नहीं आता कि के.एम. जोसेफ साहब को क्या पड़ी थी जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव प्रोसेस में इंटरफेयर करने का क्या मतलब था। ठीक है, मैं मानता हूं कि वो केरला से हैं, थोड़ा सा लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले हैं, उनको उत्तराखंड का चीफ जस्टिस बनाया गया था, उसके बाद में उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके आ रहे थे, तो उनको अगर कोई पर्सनल ग्रज था तो इस तरीके से कोई जजमेंट देना नहीं चाहिए था। एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूटिव पे छोड़ दो, जुडिशरी को जुडिशरी पे छोड़ दो। जुडिशरी जिस समय अगर एग्जीक्यूटिव के अंदर इंटरफेयर करने लग जाएगी तो फिर देश का बवाल हो जाएगा। खैर, ये बिल अब इंट्रोड्यूस हो चुका है, अब देखते हैं कि इस बिल में क्या होता है। लेकिन इस बिल में प्राइम मिनिस्टर के अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन, जो शायद कांग्रेस का आज की डेट में कांग्रेस वाला ही होगा, और एक कैबिनेट मिनिस्टर को रखने का प्रावधान रखा गया है। ये एक इम्पोर्टेंट समाचार था, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था रादर, जिसको मुझे आपको बताना था। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो चर्चा हो रही थी, उसके चक्कर में ये कहीं ना कहीं समाचार शायद दब गया होगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।